Hello people, we'll have a small lecture today, and let's start from where I finished. Let's start where I finished from yesterday. Yesterday we were talking about सारी मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात कर ली ना हमने. स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात एक बार ही दोबारा करता हूँ. कुछ बच्चों ने मेरे को नोट्स भेजे थे और वो डायग्राम कुछ गलत थे. लेट मी टॉक अबाउट दैट अगेन. तो ये मेरे पास बी अक्षर और ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट एक बार मैग्नेट भी हो सकता है और एक करंट लूप भी हो सकती है. बार मैग्नेट है तो ऐसे ही पड़ा, करंट लूप है तो वो ऐसे. दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे. नाउ इफ आई डिस्प्लेस दिस, यू नो, अच्छा चलो ये रहा बी एक्सटर्नल और दोनों ही पोजीशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन है. पर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है. यहां पे भी फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो, यहां भी फोर्स जीरो और टॉर्क zero. This means it is in equilibrium. Now, this equilibrium is stable. Why? क्योंकि जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस पोजीशन पे, ये डिस्प्लेस की, this is the displacement, this is M, this is B. A torque X in this direction, and thus the torque is opposite to the displacement, thus it is restoring the direction. दूसरा केस ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर की, राइट, डिस्प्लेसमेंट टॉर्क इधर, क्योंकि टॉर्क का right, the torque tends to restore the dipole to its original position. That is why this equilibrium is stable. Stable और unstable equilibrium will be decided उसको हिला के, इसको हिला के. ये रहा भी, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये आपने डिस्प्लेस कर दी. टॉर्क कहाँ है? यहां, in the same direction as the displacement. दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपने इस पोजीशन से यहां किया. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क कहाँ है? in the same direction as displacement. Right? ये diagrams है. This equilibrium is unstable because the moment you displace it, the torque will act in the same direction as the displacement. In both cases, the torque acts कि इस पोजीशन पे वापस ले जाए, इस पोजीशन पे ले जाए, इसको वापस इधर लाएगा, उधर लाएगा. Right? This is, there was a small confusion yesterday, and it could be a current loop or it could be a bar magnet. Now, current loop as a magnetic dipole. पहली बात basically ये है कि we know that a current loop experiences a torque in an external magnet.
sin theta, where theta is the angle which the normal to the plane of the loop makes with the magnetic. दूसरी बात, we also know that a magnetic dipole experiences the torque in an external magnetic field. Tau is equal to mb sin theta. We know that a current loop experiences the torque. We know that a magnetic dipole experiences the torque. Combining the two, from 1 and 2, m is equal to NIA. Hence, a current loop is a magnetic dipole. This is the magnetic moment. This is the magnetic moment vector. ठीक है? On observing the current, दोबारा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं. If it is clockwise, तो that end is south pole, क्योंकि साउथ ये क्लॉकवाइज, तो इधर से देख रहा हूं क्लॉकवाइज, वैसे भी साउथ टू नॉर्थ होती, ठीक है, इधर से देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, इधर से देख रहा हूं क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ करंट वही है, तो वो साउथ टू नॉर्थ आ गई. सेम एज दैट फॉर अ बार मैग्नेट. ओके, and if it is anti-clockwise, then that end is a north pole. Basically, yeah. Right? Thus, a current loop is a magnetic dipole. और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? एक बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है. दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज, यार करंट भी तो एक मैग्नेट ही है, भी उससे उठ लो, सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है ना, वो भी तो एक मैग्नेट ही है, वो भी एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ ही है. तो अब I into A पर जो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स हैं, डू नॉट ट्राई टू अराइव एट देम फ्रॉम QM into 2A, I into A से आएंगे. रादर पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स वहां से हमने डेराइव किए हैं. वी डिड देम यस्टरडे. नाउ ये जो 2 दिन का काम मैं आपको कर रहा हूँ, ये
सारा रिविजिटेड है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विदाउट कंसेप्ट्स, थ्योरी सारी रिवाइज हो गई। लॉजिक, potential energy of a magnetic dipole in an external magnetic field. Potential energy of a magnetic dipole in an external magnetic field. कितनी आई थी? U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, यहां क्या आएगा? M डॉट B। We know that a torque acts on a magnetic dipole placed in an external magnetic field. Tau is mv sin theta. रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट एज we make the angular displacement, the value of the torque will keep on changing. Therefore, we will have to find the work done for a small angular displacement d theta, for which the torque can be assumed constant. याद आया? Work done, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन तो वर्क डन to rotate the dipole by a small angle is dw is equal to tau into d theta is equal to mv sin theta into d theta. Total work done to rotate the dipole from a position theta 1 with the field to a position theta 2 with the field. ऐसे सेंटेंस लंबा हो जाता, बात कुछ नहीं है। वर्क डन है माइनस एम बी साइन थीटा, नहीं माइनस में एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2. दिस विल बी माइनस एम बी, और यहां आएगा पहले ही cos theta from theta 1 to theta 2 minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. Right? This represents the change in potential energy between the two positions. Between the two positions. We select theta 1 is equal to 90 and theta 2 is equal to theta. Therefore, work done will be minus mv cos theta minus cos 90. Cos 90 is 0. Therefore, work done is minus mb cos theta, or this work done is the potential energy of the dipole in an external magnetic field.
U is equal to minus m dot v. It is from a predefined position actually. अगर आपको कोई पूछे that you have a magnetic dipole placed in the field at an angle of 30 degree. What is the potential energy of the dipole? Minus mv cos 30. पर इसका मतलब पता है क्या है? It means आप इसको 90 की पोजीशन से 30 तक लेके आए हो. इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद इट. नो कंफ्यूजन. इट मींस दैट लिख भी सकते हो आप ये चीज. माइनस एम बी कॉस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो कोई चीज नहीं होती, चेंज होती है. दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी to rotate the dipole from an initial position perpendicular to the field to a position theta with the field. Right? अगर आपको कोई दो पोजीशंस इन जनरल दी हो तो आपको यही रिजल्ट यूज करना पड़ेगा. जैसे कि he says find the change in potential energy to rotate the dipole from its position of equilibrium to a position of stable equilibrium. नोट में डाल सकते हैं या डिस्कशन में लिख सकते हो. The work done to rotate the dipole from its position of stable equilibrium, here theta is equal to 0, to its position of unstable equilibrium, work minus mv. This is theta is equal to 180. Cos 180 minus cos 0 minus mv minus 1 minus 1, or the work done is 2 mv. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं. अच्छा, change in potential energy from theta is equal to 0 to theta is equal to theta delta u work done minus mv cos theta minus cos 0, और delta u is m into b. उल्टा कर दिया जी, 1 minus cos theta. अगर वो कहीं पे 60 डिग्री पे पड़ा है, इसका मतलब है वो प्री डिफाइंड पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू 90 की. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. लो जी, another very interesting concept is the time period of a bar magnet or a magnetic dipole. It could also be, simply a current loop. Time period of a magnetic dipole in an external magnetic field. हमें यह पता है कि इफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, चाहे वो बार मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, अर्थ की भी हो सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और चाहे कोई करंट लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है. एक्चुअली बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है ना, जो वो उसकी लेंथ ही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. पर जो करंट लूप है वो अगर ऐसे पड़ी है तो
उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ये है, वो इमेजिनरी है। तो अगर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा सा, restoring torque will act on it, right? जब तक वो यहाँ आएगा, it would gain a lot of angular velocity and it would overshoot the mark, and the sense of torque would be reversed. Thus, it will keep on oscillating about its main position, right? We know that when a magnetic dipole, if displaced from its position of equilibrium in the external magnetic field, a restoring torque acts on it. Tau is minus mb sin theta. Negative sign shows that it is restoring in nature. Oscillate करेगा, वो डायनेमिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। I into alpha is equal to minus mb sin theta. Alpha is angular acceleration, क्योंकि वो वेरिएबल इस करके, क्योंकि टॉर्क चेंज हो गया, तो हम इसको लिखेंगे डबल डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is equal to minus mb into theta. This is for sin theta approximately equal to theta, as theta is small. And in radians. Therefore, d2 theta by dt square is equal to minus mb over I into theta. Motion is SHM. Directly proportional आ गया ना, for which d2 theta by dt square is minus omega square theta. Therefore, omega square is mb by I. Omega is mb by I under the root. 2 pi by t is mb by I under the root, or t is 2 pi under root I by mb. What is I? Moment of inertia. ठीक है, I is a moment of inertia. Just as force is mass into acceleration, torque is moment of inertia into angular acceleration. Right? We have a beautiful concept on this. Magnetic moment. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ क्वेश्चंस लास्ट असाइनमेंट में थे। ये हमारे पास कंसेप्ट, एक बार मैग्नेट, राइट, साउथ नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ QM, चलो माइनस QM, ये 2A, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू QM इंटू 2A। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो ये सिर्फ आवा रह गया। तो एक और यहां भी एक साउथ बन जाएगा, यहां भी नॉर्थ बन जाएगा, पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी। The new magnetic moment is m dash is qm into A, therefore m dash is m by 2. Thus, if we split a magnet, its
pole strength will remain the same, but the dipole moment will be halved. अच्छा, अगर मैं इस मैग्नेट को जो कि -QM प्लस QM इस तरह का हाफ कर दो। एक्चुअली जो ये पोल है ना, छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं और सारे छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स इकट्ठे होके एक पोल बना देते हैं। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएंगे। ये आधा हो गया जी। तो ये -QM/2 आ गया, ये +QM/2 आ गया। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m डैश हो गई QM/2 into 2a, which is QM into a. Therefore, m dash is m/2. Right? The magnetic moment is halved. Whether you cut a magnet like this, वो हाफ तो हो गई क्योंकि सेपरेशन हाफ हो गई। अगर इस तरह काटोगे तो भी हाफ हो जाती है। क्यों हाफ हुई? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई। और देखते हैं, और मेरे पास एक नीडल थी, नीडल डाइपोल मोमेंट m is equal to QM into m। पहले भी क्या है, चलो इकट्ठे पढ़े हैं, इसको मैंने सेमी सर्कल बना दिया। तो यही पोल स्ट्रेंथ QM है, यही प्लस QM है, और ये मेरे पास m है। ये सेपरेशन कितनी आ गई? सेपरेशन आ गई 2r, राइट? As L is pi into r, therefore r is L by pi. The new magnetic moment is m dash, which is QM into 2r, which is QM into 2 into L by pi. QM into L was m, therefore m dash is 2m by pi. Very, very interesting कि डाइपोल मोमेंट्स कैसे बदल जाती हैं उसको टर्न करने से। ओके, अनदर कंसेप्ट कहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट का टाइम पीरियड t था। m by I by m। ये एक बार मैग्नेट था, ये ऑसिलेटर वाला। इसको ऐसे काट दिया और एक पार्ट ऑसिलेट है। वन पार्ट इज मेड टू ऑसिलेट in the same magnetic field। अब टाइम पीरियड निकालना है कितना? सारे अच्छे सवाल मैं करवा रहा हूं। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया जी, m डैश इज इक्वल टू m/2। अभी किया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू मास, जान के m नहीं लिख रहा, mL² बाय 12। थिन रॉड की तरह आधा कर दिया, आधा कर दिया तो मास भी मास अपॉन 2 आ गया। n को आधा कर दिया, ये आ गया मेरे पास L² by 4 अपॉन 12, mL² by 12 I by 8। Therefore the new time period t dash is 2 pi under root I dash upon m dash into b। 2 pi I dash कितना है? I dash is I by 8 और m कितना है?
बाय 2, ये रहा, ये आ गया 4, तो t डैश वुड बी t by 2, ये लो जी आई कॉल इट अ डे। हमेशा सोचते हो, वो रोज ही कहते हैं छोटा लेक्चर लगाएंगे सर, और आज मैंने छोटा लगाया, सिर्फ 31 मिनट्स का लेक्चर है जी, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू डू। यार एक और सवाल है बहुत अच्छा, वैसे एक और सवाल है मेरे पास बहुत अच्छा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, बोलो तो करवा दो। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म भी है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, सिर्फ स्टेटमेंट और कुछ नहीं। Gauss theorem in magnetism, remember Gauss theorem in electrostatics? पहले उसकी स्टेटमेंट देता हूं। The surface integral of the electric field for a closed surface in air is 1 over epsilon naught times the net charge inside the closed surface, and it used to represent the number of electric field lines. नेट कितनी है, कुछ एंटर कर रहे हैं कुछ लीव कर रहे हैं, नेट कितने हैं? अगर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो लीव करेंगे, नेट नेगेटिव चार्ज होगा तो एंटर करेंगे। डाइपोल के लिए कितना था? 0। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, और द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल inside the closed surface is always equal to 0, which also means that the number of field lines entering and leaving are the same. कुछ हो ही नहीं रही इंटरसेक्ट। मैग्नेटिज्म में we only have a magnetic dipole, we don't have a magnetic monopole. So the surface integral of the magnetic field for a closed surface in air is always equal to 0. The surface integral of the magnetic field for a closed surface is always equal to 0. Yeah. कहता है सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इसका सिग्निफिकेंस है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट इन नेचर। मंदीप यार मार्कर तक खोल। Isolated magnetic monopoles are non-existent in nature. This is simply a mathematical way to say that isolated magnetic monopoles नहीं होते हैं, magnetic dipole ही होता है हमारे पास। Isolated magnetic monopoles are non-existent in nature. ये मतलब है इस बात का कि surface integral of the magnetic field for a closed surface is 0. Just one more question please, the last question for the day and for the topic. 2 दिन में मैंने खत्म किया ये टॉपिक, पहले भी किया हुआ था, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, वो थोड़ी पेचीदा चीज है। In this question we have a magnetic needle here, a small magnetic needle here. You fix it. Obviously, this is its equatorial line and this is its, this is its axial line. No, sorry. This is its axial line and this is its, उल्टा हो गया ना, वो उस तरह पड़ा। ये इसकी axial line है और ये इसकी equatorial line।
the magnetic field at a point on the axial line is twice the magnetic field. We remember that the magnetic field, the direction of the magnetic field over here, the direction of the magnetic field over here is along. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे, ये नीडल है, दिस इज अ नीडल, इसको कोई नाम दिया हुआ हमने, दिस इज अ नीडल, और यहाँ पे 5 पोजीशन पे नीडलें पड़ी हैं, दिस इज Q1, एक नीडल यहाँ पे ये पड़ी Q1, एक नीडल ये पड़ी है Q2, एक नीडल ये पड़ी है Q6, क्या डायरेक्शन Q6, और ये नीडल एक पड़ी है Q3 एंड Q4, ये एक नीडल पड़ी है Q3, और ये एक नीडल पड़ी है Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, और एक नीडल हमारे पास Q5 पड़ी है, ये बेसिकली Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are magnetic dipoles placed in the field of क्या बोले इसको P, ये एक नीडल है P, you have to determine for what position is the needle in stable and unstable equilibrium. Answer is सवाल. It is such a beautiful question. I expect this question in your school boards. I expect this question in your IITs or medical entrances. सारा कुछ पता होना चाहिए. P is a needle due to which the magnetic field. Let me mark it with blue. ठीक है? गलती ना होने पाए. Axial line पे ये field की direction. ये field की direction. Right? B. ये फील्ड की डायरेक्शन B, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट टू द लाइन. एक ही जगह बना लेते हैं, यहां पे ये डॉटेड लाइन शोइंग B, और यहां पे भी ये फील्ड की डायरेक्शन, या ब्लू नजर का आपको कम आता है, मैं ब्लैक से बात कर देता हूं. The dotted line shows the direction of the magnetic field. This is the magnetic field due to the equatorial line, and this is the magnetic field on the axial line. The black marker shows the magnetic needle P, and the dotted black lines shows the direction of the fields on the axial and the equatorial lines. The magnetic field on the axial line is on the same direction as the dipole moment, and the magnetic field on the equatorial line is opposite of the dipole moment. Now, for equilibrium में कौन-कौन सी हैं? Equilibrium means force zero, torque zero. That is possible if
यार Q1 PQ1 PQ4 PQ5 PQ1 PQ1 पहले इक्विलिब्रियम PQ1 PQ1 ये फील्ड की डायरेक्शन है, उसके अलाउंग। फिर PQ2 बिल्कुल भी नहीं, PQ3 बिल्कुल भी नहीं, PQ4 यस, PQ5 यस, PQ6 ये इक्विलिब्रियम है। इनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये रेड में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इन द सेम डायरेक्शन है, PQ1 and PQ5 and PQ4। Q4 और Q5, या मैंने गलत तो नहीं बनाया? Q1, Q2, Q3, Q4. So we have Q4 and Q5 in अच्छा Q1 actually is here, doesn't matter। एनसीईआरटी सवाल है तो वही रहने दो, ये रहा। अब देखते हैं दोबारा। PQ1 is stable, only PQ4 and PQ5 are unstable equilibrium। PQ4 and PQ5 because M and B are in the same direction। तो इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस टॉर्क लगेगा जो बाहर है। जहां से शुरू किया था लेक्चर वहीं खत्म हो रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है PQ1 because M and B are in opposite directions। ये इसका B है, ये है PQ1 and PQ6 and PQ6 because M and B चाहे एक्सियल है चाहे कॉन्टिन्यूअल आर इन opposite directions। We started the lecture here कि if M and B are in opposite direction वो इक्विलिब्रियम तो है पर वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा तो वो उस डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, भागेगा और इन दोनों में वापस आएगा। और जो पोजीशंस हमारे पास PQ2 है वो तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और जो पोजीशन हमारे पास PQ3 है वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो प्लीज सी दैट यहां तक आपका काम हो गया। एक टॉपिक थोड़ा सा और रह गया, किताब में से निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चलो अगले टॉपिक में भी शुरू कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्टडी करनी है अभी हमने। दैट्स इट प्लीज, मे बी आई डिवोट हाफ अ लेक्चर मोर बट दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर श्योर। ओके, बाय बाय। कल छुट्टी, रिवाइज करना। 44 minutes please।